Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I audible? Hello. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ आ रही है। Okay, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. But I see the less strength, I think just because of the time has changed. Seema, one thing it's very clearly told to you all, if the strength gets low, we will be again getting back to the same old timings of 5 p.m. Okay? Fine. Let us start today's class. Continue from where we have stopped in the last class. So previously we were discussing about the types of sentences with respect to structure. In that we have seen 4 types. Can anyone list it out? The 4 types. I want the answer in the chat box. What are the 4 types of sentences with respect to structure? Yes, simple, compound, complex and compound complex. Lubna has answered this very well. And Samreen Sultana has said declarative, assertive, imperative and interrogative. But Samreen, I think you missed my question. I asked specifically with respect to structure. So with respect to structure, we have 4 kinds of sentences. Those are simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Now, in that kinds of sentences, we came across the terms called as independent clause and dependent clause. So we have seen this explanation of the independent clause and the dependent clause with various examples, and we got to know finally this is just a review slide which expresses the complete thought and can stand alone. Okay, those are the independent clause, and the dependent clauses are what, which which are incomplete on their own and they need some other sentence to complete the meaning. Okay, तो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए we need some another sentence or a clause. Fine. And both of these sentences will have the subject and a predicate term into it. The subject and the predicate term also we have seen in the last class. If examples are needed, now I will be doing that. Yeah, here you can see certain examples of the main clause and the subordinate clause. So clause is something where we are saying how it is being meant or formed, right? So I like bananas and I like grapes. So both are main, both are independent of each other. So this kind of sentence is of compound sentence. ये simple sentence नहीं बल्कि compound sentence है because we got a connective over there. Conjunctive connective. Okay. यहाँ पे आपको एक conjunction आ गया है. Okay. We can call them as coordinating conjunctions. Right. So this is our compound sentence. Next, another example we are having here. After she picks me up, mom is taking me to buy shoes. See here, the first sentence. After she picks me up, it doesn't have any complete meaning into it, right? So when this clause is incomplete into itself, it is dependent on to another clause. And the dependent clause is what? Mom is taking me to buy the shoes, right? So ये हमारा क्या है, main clause है. Mom is taking me to buy shoes is our main clause, and upon that we are having the dependent clause, that is our subordinate clause. I hope the example is clear to you. So subordinate clause जब भी आएंगे ये आपके connective conjunctions के साथ आएंगे या फिर followed by commas or and the dependent clauses with them. Next, there you see another example. I first met her in Paris, where I lived as a small child. So here, I first met her in Paris. ये complete sentence है अपने आप में.
अगर आप यहाँ पे द अदर पार्ट इफ यू हाइड इट अवे, okay, then what is happening there? If I read only a simple sentence as I first met her in Paris, this is our complete sentence. Whether I give the other part subordinate clause यहाँ पे लिखे या ना लिखे, no problem, because the first sentence which is displayed to you as your main clause, it's whole on its own. Okay, I first met her in Paris is our main clause. इसके बाद में जो भी कंटिन्यूटी है सेंटेंस की, where I lived as a small child. ओके, ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट होगा भी या नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारा मेन क्लॉज वहाँ पे कंप्लीट है. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लॉज. ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ऐड ऑन की गई है. फाइन. And predicate. What is a subject and what is a predicate? In the last class we have seen certain examples. Now let us see. Every complete sentence must have a subject and a predicate, right? हर एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएगा. आप सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाएगा. द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, इट इंक्लूड्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस किसके बारे में है, क्या चीज के बारे में है, हु एंड व्हाट. ओके, अगर फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग दैट शी इज अ गर्ल. ओके, शी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है. इज ए गर्ल क्या है, यहाँ पे कुछ एक्शन तो नहीं हो रहा है बट हम कॉमन नाउन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बट इफ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वेरी केयरफुली, शी इज अ गर्ल who is writing in a notebook. Okay, now I'm giving a complete overview of the girl, okay, who is doing some action. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड समझने के लिए आपको माइंड में क्या रखना है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो एक पर्सन का नाम हो या प्लेस का नाम हो, ओके, या फिर उसको प्रोनाउन से डिफाइन किया गया हो, इन दैट प्रोनाउंस यू कैन गेट ही, शी, इट, दे, ओके, all these terms. And predicate is purely going to perform certain actions onto it, which will be defined with the help of the verb. Okay, so definitions over here has been given to you. Yes, ma, whoever has joined only for today, no issues. I told you previously also. Very soon you will be having the review of this. No worries. After 10 days of the class, we'll have a brief review. Okay. So try to focus on today's class now. Every complete sentence has two parts. तो जब भी आप complete sentence के बारे में बात करोगे, इसमें two parts रहेंगे. एक होगा subject और दूसरा होगा predicate. Subject को कैसे पहचाने हम, वो एक नाउन तो भी हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है. नेक्स्ट, प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, जो कि नाउन के बारे में, नाउन क्या कर रहा है उस चीज को डिफाइन करेगा. तो हियर यू विल बी हैविंग अ स्मॉल असाइनमेंट. ओके, असाइनमेंट नहीं कहूंगी मैं, जस्ट एन एग्जांपल वी आर हैविंग हियर. तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से काम कर रहे हैं. व्हाट डज सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट क्या करेगा, टेल मी. आई वांट द रेस्पॉन्सेस. Yes, respond to me. What is subject about?
Yes, in the given sentence, ghost is subject. It's already given to you. But I'm asking, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट का रोल क्या होगा, काम क्या करेगा वो. If we go back to the previous slide, you can see there सब्जेक्ट क्या है, which includes who or what the sentence is about. Okay. Yes, सब्जेक्ट काम करने वाला है और प्रेडिकेट क्या काम किया जा रहा है वो डिफाइन करेगा. So in this sentence we are having the ghost pops out of the mailbox. So pops क्या है यहाँ पर, प्रेडिकेट है, एक्शन हो रहा है वहां पर. Now another example for you. The predicate tells what the subject is doing. Okay. So basically all the predicates begins with the action or linking terms. You can see here another example. My family goes on hikes. Goes क्या है यहाँ पर, एक्शन स्टार्ट हो रहा, बिगिन हो रहा. तो प्रेडिकेट आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे, from where the verb term begins or the action takes place. So here my family is subject and goes on hikes is your predicate. Now here are certain questions to you. Who was aboard the gallon? So in this sentence, who is the subject? What happened to the people? What is again the subject? So basically आपके sentence में है ना, directly it can be framed in the form of your questioning or a simple sentence also. There also you can identify the subject and predicate. But here both the sentences are in the questioning format, that you have to remember. Okay. So by here we are coming to an end of the subject and predicate concept. So this is the small assignment that you will be doing for today, identifying the subject and predicate. I want everyone to take the screenshot of this and complete the assignment. If you have done, let me know. Okay. Now let us move on to the next assignment. This is also a small assignment where you will get a clear picture of what are the subjects and predicates with various examples. Yes, do the assignments and keep it with you. Very soon you will be getting to know how to submit the assignments. Okay. Now, next, coming to our previous topics where we stopped in the beginning. तो हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट था सेंटेंसेस के बारे में, बट इन बिटवीन वी गॉट सम टर्मिनोलॉजी ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब क्लॉज आ गया तो फ्रेज भी आता है. तो इसकी क्लैरिटी देने के लिए हम पिछला सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. No doubt that is also one of the grammar of English. You have to focus even on those terms. So why I kept those terms in the middle is as it came into my slides. Okay. You need to understand them first, then only it will be clear. So that is the reason we halted this topic and we focused on to the terms that we have identified in this concept. Fine. तो हम कहाँ पर थे, kinds of sentences के पास with respect to structure, and in that we have dealt even with the clauses,
phrases. Then we have seen about the subject and the predicate concept as well. Fine. Now, coming back to this topic, I hope by now all the examples and clear to you, sentences are clear to you. दिस इज अ क्विक रिव्यू. जो भी पिछली क्लास मिस किए या फिर आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो ये हमारा एक्चुअल टॉपिक है. इसको आप ध्यान से देखें स्लाइड पर और समझें इसको. मैं एक बार दोबारा से रिव्यू कर देती हूँ. व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस विच विल हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विच इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन. तो यहाँ पे अगर आप पढ़ के देखेंगे, सोफिया स्टूड ऑन हिज टिपटोस. ओके, सो यहाँ पर एक दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है वो कंप्लीट करने के लिए. द ट्रक टर्न्ड द कॉर्नर. द ट्रक टर्न द कॉर्नर. अगर इसको समझाने के लिए मैं क्या बोलूँ, सोफिया अपने पैरों पे खड़ी नहीं कह सकते हम. टिप ऑफ द टोस मतलब उंगलियों पर चलना जैसे बोलते हैं, पैर की उंगलियों पर. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टिप टोस. नेक्स्ट, द ट्रक टर्न द कॉर्नर. एक ट्रक है ना, कॉर्नर पर लुढ़क गई है. ओके, उसका मीनिंग उस तरह से आता है. Isabella trilled in circles. So she trilled herself inside the circles. She cooked the food. That is the complete sentence on its own. So this is our simple sentence. Oliver made an art. Okay. ऑलिवर क्या किया, वो एक आर्ट बनाया है. ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस है. इसको किसी और डिपेंडेंट सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू द कंपाउंड सेंटेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस? वेयर वी आर हैविंग टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस. फाइन. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल. आई लाइक आई लाइक कोक एंड मिया लाइक्स टी. Mia is the name of a girl or a boy, we can say. Just identify that it's a name. Okay. I like Coke, me and Mia likes tea. Both are two different independent clauses and they have been combined together with a comma and a connective conjunction. Our bike broke down. We came last. देखो यहाँ पे दोनों again we are having the connective conjunction there. Okay. Connective conjunctions can be and, but, yet, so, for and so on. इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर symbolic representations में भी हो सकते हैं with the help of a comma, semicolon and so on. Okay, so what is the second sentence about? Our bike broke down. Bike गिर गई है और टूट गई है and we came last. That's the reason we have to come last. He studied very hard. He passed his exams. ठीक है, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. ही स्टडीड वेरी हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत किया और वो पास हो गया. ही डिडंट वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटी येट ही वेंट टू पार्क. यस, यहाँ पर येट जो है ना, ये अगेन कनेक्टिव कंजंक्शन है जो आप यूज कर रहे हैं टू टू जॉइन टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ही वेंट टू पार्क इज अ कंप्लीट सेंटेंस on its own. Okay. He didn't want to go to the university is again an independent clause. Both the independent clauses are connected with the help of a connective conjunction. Next, coming to the complex sentence. We have gone through this previously. A sentence having one independent clause and two or more dependent clauses combined together is forming a complex sentence. So यहाँ पर example में क्या है आपके लिए? Amelia missed her exam because she was late. Because क्या है यहाँ पर? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक कनेक्टिव कंजंक्शन है जो कि दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है. एमेलिया मिस्ड हर एग्जाम. क्यों क्यों मिस करती वो अपना एग्जाम? बिकॉज शी वॉज लेट. ऑल्दो शी वॉज वेल्दी शी वॉज स्टिल अनहैप्पी.
ऑल्दो क्या है यहाँ पर? अगेन द कनेक्टिव कंजंक्शन. शी वॉज वेल्दी. अगेन अनदर कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. शी वॉज स्टिल अनहैप्पी. वो वेल्थ होने के बावजूद भी अनहैप्पी है. When Isabella was younger, she believed in fairy tales. ओके, हम वो उस जमाने की बात कर रहे हैं जबकि वो यंग थी. नाउ शी हैज पास द टीनेज. ओके, एट दैट टाइम शी यूज्ड टू बिलीव इन द fairy tales. So here you might have understood the importance of independent and the dependent clauses. किस तरह के sentences को हम dependent clauses बोलते हैं and independent clauses कहते हैं. Now coming to the last category, that is the compound complex sentence. A sentence having two or more independent clauses and one or more dependent clauses inside them. Okay, altogether forming the compound complex sentence. Sebastian loves his sister and she loves him too because he pays her bills. Okay, both are brothers and sisters. Okay, Sebastian is a boy who loves his sister and she too loves his brother. Why? Because he used to take care of her very well. तो यहाँ पर देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिल गए आपको और एक डिपेंडेंट क्लॉज भी मिल गया बिकॉज ही पेज हर बिल. नेक्स्ट, द डॉग रैन ऑफ व्हेन आई चेज्ड हिम बट आई डिडंट केयर. एक डॉगी जो था वहां पे वो भाग गया. क्यों भाग गया? आप उसको सताने लगे. द बॉय यू आई चेज्ड हिम बोलकर है. ओके, मैं उसको सताने लगी तो वो भाग गया. And I did not care him where he went. I just went on my own path, right? Next, though my father says it doesn't. तो यहाँ पर देखो अपना सेंटेंस शुरू हो रहा है एक कनेक्टिव कंजंक्शन से. दो इज व्हाट? इट्स अ कनेक्टिव कंजंक्शन. My father says it doesn't. Here is a list of simple sentences. You can go through this slide or make a note of it. Each one of you go through this and understand the simplicity in the sentence because they are independent on their own. A clause means where a subject and a predicate exist. एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा तो उस चीज को आप क्लॉज कहते हैं. Hope I am clear. If you need, take a screenshot of these sentences, go through them, understand them carefully. Okay, let's move to the next slide. Yeah, I was keep talking about connective conjunctions. Yes, coordinating conjunctions. तो ये हमारे बेसिक है. कनेक्टिव कंजंक्शंस आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? बेसिकली वी रिमेंबर देम बाय फैन बॉयज. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. ये बिल्कुल थोड़े हैं. हम यहाँ पर याद रखने के लिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं जिसका नाम है फैन बॉयज. ठीक है. So these sentences will help you, sorry, not sentences, these coordinating conjunctions will help you to join
टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, तो आपको नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ही वॉज टायर्ड फॉर ही वेंट टू बेड अर्ली। वो बहुत थका हुआ था, जिसकी वजह से वो बेड बेड सोने के लिए जल्दी चले गया। ठीक है, आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश द डिशेस। आई थिंक बोथ द sentences आर क्लियर टू यू हाउ वी आर कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम। और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जेन हैज अ रेड कार बट जिल हैज अ ब्लू कार। दोनों के पास अपनी अपनी ओन कार है। ओके, बट यहाँ पे हम वेरिएशन किस तरह से बताएं? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इसीलिए वहां पर कनेक्टिव कंजंक्शन बट यूज किया गया। होप आई एम क्लियर, वेरी वेरी क्लियर विद द सिंपल एंड द कंपाउंड सेंटेंसेस। और जो लेट कमर्स है या फिर न्यू जॉइनीज है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर होगा तो नो इश्यूज, बिकॉज अ रिव्यू आफ्टर 10 days we will be having a short review, then hopefully everything will be clear to you. Okay, now coming to the certain examples of the compound sentences. You take a screenshot because you go through them, and later on assignment will also be given to you upon these types of sentences. Be on time, dear, then only it will be helpful to you. Okay, quickly take the screenshot of even this compound sentences. Complex sentences, सारे definitions आपको याद होने हैं, तभी जाके आप इसको easily identify कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पढ़ने के लिए अपने पास लिख लीजिए। अभी लिखने का उतना टाइम तो नहीं मिलेगा, सो आई एम टेलिंग यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट and make a note in your notebook, because next time when you review them, ample of examples will be there in front of you. Fine, I'm moving forward. Last but not the least, that is your compound complex sentence. तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक नया एग्जाम्पल देकर समझाया गया है क्लैरिटी के लिए। इतने बार ये सेंटेंसेस को इसीलिए समझाया जा रहा है बिकॉज देयर इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट। आप अलग से सिंपल को तो आसानी से समझ गए, कंपाउंड भी समझ में आ गया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने पर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स क्या है? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट, दोनों भी उसमें मौजूद होंगे। अब हम जो दोनों कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला देंगे ना, तो ये तीसरी कैटेगरी जनरेट होगी जिसका नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, आई विल पिक वन ऑफ द गर्ल हु विल एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। ठीक है, सो गो थ्रू इट। जाहिदा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और एक्सप्लेन कीजिए सेंटेंस। जाहिदा, unmute yourself and explain me this.
Zahida, can you unmute yourself? I already sent a request to you. Okay, if anybody else interested, raise your hand. I'll unmute yourself. Compound complex sentence. These have at least two independent clauses and one independent clause. Means the compound complex the complex sentence having two uh, examples. I woke up at 6 o'clock because I had to hit the gym, but I was too tired to get out of bed. I woke up at 6 o'clock ये independent है, and because I had to hit the gym, it also a independent sentence. But connective conjunction हो गया है but I was too tired to get out of the bed. It is a dependent. I was too tired to get out of bed. Yes, what is a dependent clause over here? Yes, ma. What is the dependent clause we are having here? Because I had to hit the gym. आपने ऑलरेडी एक टाइम बता दिया है कि I woke up at 6 o'clock. Okay, you'll get up at 6 o'clock. You told it. Why do you get up? Why you want to get up? You have given the dependent clause up with that. You have to hit the gym, right? Next, why you were not able to get out of the bed is as you were too tired. You were not able to get out of the bed. So both the independent clause combined with the dependent clause is forming your compound complex sentence. And here is a list of all the compound complex sentence. See, whatever the highlighting parts are there into it, those are your connective conjunctions. Okay, make a note of it also. Okay, now, so for today, what we have done is we have completed all our topics of sentences with respect to function and with respect to structure as well. हाँ, conjunction क्या है आपका part of speech है. What is a conjunction basically? Which helps two different independent clauses to connect with each other. And है, but है, yet है, because है, ये सारे आपके conjunctions है. इसीलिए वहां पर आपको कहा जाता है कि these are the connecting conjunctions. And I have given a small variation also of it with the help of the fanboys short notation to remember it easily. So what you can do now is quickly go through these sentences because another new topic we cannot begin today. So I want to have ample of time given to you for these concepts. If still any doubts, you can ask me. ठीक है, थोड़ा सा easy way में फातिमा, what was your name? फातिमा बेगम.
आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे यहाँ पर है ना 4th नंबर का सेंटेंस को एक्सप्लेन कीजिए। Yes, ma, quickly unmute yourself. So for today, you can ask me any doubts with respect to these sentences because tomorrow we are going to begin the next topic. If you have any doubts in these kinds of sentences, either the assertive, declarative, imperative, interrogative, exclamatory, or the simple compound, complex, or complex and compound sentences. Any doubts from these topics you can ask me for now. Today's homework I already gave you with respect to subject and predicate. And next is about these sentences only. You will be making 5 different sentences of each topic. Simple के 5, compound के 5, complex के 5, compound complex के 5 sentences को बनाएंगे और उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि which one are independent and dependent clauses. तो एग्जाम्पल्स आपके पास है, इनके अलावा होने चाहिए आपके एग्जाम्पल्स. डोंट कॉपी पेस्ट द सेम थिंग एज असाइनमेंट और होमवर्क. Create your own sentences. See, when you understand the concept, it will be clear for you to frame any sort of sentence of your choice. Okay? If no doubts, we are coming to the end of the class for today. Tomorrow, the next concept or next class will be there. Okay? So I want you all to connect with all your friends, whoever missed today. And timings and all will be again known to you in the group. And now I would like to hand it over to Sister Amreen. One second, let me take the attendance for today. Because whatever the link previous has been shared to you, upon that only it will be shared.
Okay, ma. So we are coming to the end of the class. So we will be ending with a dua. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu khairan kaseera.